वेलकम टू ओडिशा ऑटोमेशन सॉल्यूशन। आज हम एक नया सॉफ्टवेयर के बारे में डिस्कशन करेंगे। कोडिसिस सॉफ्टवेयर है, ये एक ओपन प्लेटफॉर्म है। ये सॉफ्टवेयर का सॉफ्टवेयर ओपनिंग कैसे होता है, हम कैसे प्रोग्रामिंग लिखेंगे इसके अंदर, वो हम डिस्कशन आज करेंगे। देखिए, ये है मेरा कोडिसिस सॉफ्टवेयर है। कोडिसिस वर्जन 3.5 है ये। देखिए, ये मेरा कोडिसिस सॉफ्टवेयर है। आफ्टर ओपनिंग, गो टू न्यू प्रोजेक्ट, ओके, then select standard project. Okay, this is the name you have to give. Software opening, software opening, software opening. Okay, software opening of codesys. Then this is the path location where you have to save. Already I have created in desktop one codesys folder. Here I am saving the file. Okay, you want to see means see, this is the desktop there, codesys. Okay, then go to okay. After that, you have to select device codesys control win v3 3s smart software solution GmbH. Okay, then PLC program, what type of language you have to write the program. Okay, here you have to get the 6 types of language: ST language, ladder language, functional block, CFC language, instruction language and sequential functional language. First हम ladder language में देखेंगे. Okay, I am selecting the ladder, then okay. दिस इज द प्रोसेस, कैसे हम प्रोग्रामिंग इसमें लिखते हैं. ओके, आफ्टर दैट व्हाट यू हैव टू डू, यू हैव टू राइट द प्रोग्राम हियर, वेयर यू हैव टू राइट प्रोग्राम. दिस सी PLC PRG, here you have to write the program. Okay, double click here, then here it will come. Here you have to write the program. Okay, after writing you have to do the compile. Okay, for compiling go to build, generate code. Okay, F11. Okay, after writing, see, if after writing if any error will occur, it will show here. Okay, अभी ब्लैंक प्रोग्राम है, अभी कुछ नहीं है, टोटल एरर है, 0 है. आफ्टर बिल्ड करने के बाद आपको जाना है ऑनलाइन. ऑनलाइन जाने के बाद आपको सिमुलेटर ऑन करना है, क्योंकि अभी हमारे पास रियल टाइम का PLC DCS कुछ नहीं है, इसलिए हमको सिमुलेटर यूज करके ये सॉफ्टवेयर को हम सिमुलेशन करेंगे. सिमुलेटर, ऑन द सिमुलेटर. ओके, दिस इज द सिमुलेटर, देन go to online, then login. Okay, login. Okay, after login go to debug, start. After what we have to write the program. अब जो प्रोग्राम इसमें लिखे हैं वो प्रोग्राम का आप सिमुलेशन कर सकते हैं. ओके, आफ्टर सिमुलेशन यू हैव टू stop the debug, go to stop. Okay, then log out. After that we have to edit the program and एडिट भी कर सकते हैं. उसके बाद लिख के और एक बार जैसे बिल्ड जाके सेम आफ्टर लिखने के बाद बिल्ड जाके आप जनरेट कोड करके उसके बाद लॉगिन करना है, लॉग ऑनलाइन जाके लॉगिन करना है, देन डिबग जाके स्टार्ट करना है. स्टार्ट करके आप सिमुलेशन कर सकते हैं. ओके, ये है मेरा सॉफ्टवेयर ओपनिंग का स्टेप है. ओके, इसमें आप ग्राफिक्स भी आप इसमें ऐड कर सकते हैं, मीन्स स्काडा. ओके, फॉर स्काडा के लिए आप गो टू एप्लीकेशन, ऐड ऑब्जेक्ट. ओके, विजुअलाइजेशन. ओके, विजुअलाइजेशन,
this is the visualization. Okay, then add, this is the visualization. After visualization, click like this, page will come. After that, you have to, this is the lamp. See, in basic, rectangular, round, ellipse, line, polygon, polyline, pie, image, everything is coming in the common, in common control. Group box, combo box, array, integer. Okay, then alarms. After that, the measuring control, bar graph है, meter है, potentiometer है, histogram है, metering है. Okay, then in the lamps, see, I am placing lamp. See, this is the lamp, and this is the push button. Okay, after that we have the naming for that. Double click here. Okay, in variable you have to select the topic. Okay, what you have to return in the program. Okay, go to application. I have nothing written the program. If you will return this push button है, start push button, you have to select the start push button. आउटपुट के लिए आपको सेम वेरिएबल जाना है, लैंप नहीं तो मोटर, कुछ भी आप जो नेमिंग देंगे वो नेमिंग हिसाब से आप करके उसके बाद आप सेम थिंग फर्स्ट बिल्ड, देन ऑनलाइन जाके लॉगिन करना है, देन डिबग करके स्टार्ट करना है. आफ्टर स्टार्ट द प्रोजेक्ट यू हैव टू, व्हेन वी हैव टू क्लिक द पुश बटन, दैट टाइम मेरा आउटपुट विल बी एनर्जाइज. लाइक दिस आपको सब प्रोग्राम में विजुअलाइजेशन स्काडा आप बना के सिमुलेशन कर सकते हैं. ओके, नेक्स्ट क्लास में जितना भी हम जो लैंग्वेजेस है, एक एक लैंग्वेज के बारे में हम डिस्कशन करेंगे. ओके, थैंक यू.